दिमाग में इसलिए नहीं आ रहा। हम लोग मिट्टी खाते हैं। नहीं मैं वो लोग खाना खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं? अरे भाई मेरी तो बात सुनो, यहाँ पे दरअसल गुर्बत ही इतनी वो दिखा के तो लोगों को ख्वाब भी देखने से महरूम कर दिया। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। मैं उदारी नाजी, मेरे साथ मौजूद हैं मुस्कान खान और सदाम हुसैन। मुस्कान खान, जो आपकी ये पहली वीडियो देख रहे हैं, आप थोड़ा बताना चाहेंगी आप क्या करती हैं? जी दोस्तों, मैं क्या करती हूँ, चलिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैं दरअसल एक्टिंग कर रही हूँ, और अब कोई कमर्शियल होता है और जैसे कोई अच्छा एड वगैरह है, फ़ोटो शूट, ब्रांड शूट वगैरह, तो वो मैं करती हूँ। और अभी तो मेरी स्टार्टिंग है इंशाल्लाह ताला मैं और आगे बढ़ूँगी मेहनत करके, और आपको बहुत जल्द नज़र आऊँगी स्क्रीन में। आप लोग देखिएगा और ज़रूर बताइएगा, मैसेज करके, कमेंट्स करके, यूट्यूब चैनल में भी, क्योंकि मैं चैनल में फ्री टाइम में बैठती हूँ, इसमें भी मैं काम कर रही हूँ। तो सदाम भाई आप बताएं। आप ज़रूर देखिएगा। मैं भी एक्टिंग ही करता हूँ, आपको भी तो पता ही है, आपको भी बता दें कि मैं भी एक्टिंग ही कर रहा हूँ। मैं ये कि 6-7 साल हो गए हैं मुझे, तो ये कि हमने तो काफ़ी काम किया भी है, काफ़ी प्रोजेक्ट्स अभी भी चल रहे हैं। तो ये कि तो वक्त तो बीच में इनसे तारुफ चलते रहेंगे। बस ये है कि वो एक आगे वाला जो फेमस वाला लेवल होता है वहाँ पे नहीं पहुँचे। इंशाल्लाह हो और जाएंगे, वो भी हो जाएंगे। मेहनत देखिए, सबसे मेन चीज़ होती है मेहनत, आपकी लगन, और आपको दिन रात एक करना होता है। किसी काम में आपने कामयाबी हासिल करनी है तो आपको अपनी आराम को, अपनी सुकून को मारना होता है। जब तक आप अपने आराम और सुकून को मारेंगे नहीं, आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगे। मुझे तो कोई आराम सुकून कर रहा है, मैं उसको भी मार देता हूँ, या वीडियो चले जब भी नहीं आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल है इंडियन मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन। स्वीट एक्सपेंसिव 4 लाख का। क्या है? अबे 40 लाख 40 लाख का? मैं तो यार लगता कि सोच सकता हूँ। मोस्ट एक्सपेंसिव ट्रेन सूट एक्सपीरियंस मतलब, यानी कि वो जो वो होता है ना, एक जैसे कि रूम होता है, स्वीट होता है ना, जैसे होटल में। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं, वीडियो को देखते हैं क्या है। ये ट्रेन है, देखते हैं इस वीडियो में क्या है। कितनी बेहतरीन ट्रेन है, इतनी महंगी ट्रेन, 40 लाख की। Good evening, Miss Bianca. Welcome on board. The Maharaja Express has 4 royal journeys, and this time I am going to be exploring the heritage of India, which starts from Mumbai CSMT station. Earlier you might have seen my video on the Wanderlux experience on Palace on Wheels. Now, not drawing any comparisons, but I have been told that the Maharaja Express is India's #1 and most expensive train, along with being the world's leading luxury trains. Now, I'm very excited to find out what's new in store for me this time. Well, do you see what's happening behind me? That's what I call a royal welcome. Band, baja, dhol, shehnaiya, a red carpet and the whole staff to welcome us. Well, this is India's #1 and the world's leading most luxury train, the Maharaja Express, where I will be taking you on a Wanderlux journey that costs 40 lakh rupees for 2 people for a 7-night journey. Come hop in with me.
Are you ready to check it out? Let's go. नमस्ते मैडम, महाराजा एक्सप्रेस के प्रेसिडेंशियल स्वीट में आपका स्वागत है। Thank you so much. Welcome to my presidential suite. I can't begin to tell you how exquisite this suite is. It occupies one full coach of a train. It's like a 2-bedroom mini apartment. It's 448 square feet. It has a living room and 2 bedrooms. The master bedroom comes with a double bed, an en-suite bathroom with a bathtub and a shower stall. And all the toiletries used in each of the guest rooms on the train are from Forest Essentials. The borders around the starry ceiling also that you see is all hand painted. Now the second bedroom has 2 twin beds and an en-suite bathroom with a separate shower stall. And coming down to the living room, it has a sofa seating along with a study table touching a mini bar with some refreshments, magazines and newspapers. Now the other amenities on the train include a direct dialing telephone and also has television and OTT subscription in each guest coach. So you can surf on Netflix, Hotstar, whatever you like. So the costing for this comes up to approximately 40 lakh rupees excluding taxes, which is about 20 lakh rupees per person for a 7 days journey. Now if this isn't royalty, then what is? You know, I truly feel a very majestic and a royal vibe from this entire presidential suite, and the guests too have been some renowned personalities like our ex-president of India, Mr. Ramnath Kovind, Mrs. Cherry Blair, Sir Trevor McDonald, some famous Hollywood celebrities have all been a part of this train. Yeah, RK, one black coffee, please. Yes, thank you. And how can I forget the 24/7 private butler service that is assigned to every guest on the train. All I have to do is dial a respective number where the private butler will be assigned to me, or I can even call them on their personal number to tend to anything I ask for. So coming down to the other facilities of the Express, there are 2 very elegant lounge bars. The first one is the Raja Club and the second is the Safari Lounge, along with 2 in-house dining restaurants. The Mayur Mahal, which depicts a peacock themed restaurant, and second is the Rang Mahal, which reflects the colors of the palace, and they're absolutely divine. Now I have to pay some emphasis on the interiors that make it super luxe. The Mayur Mahal, as you can see, is like a sight right from a royal dining imagery. The wooden work that is used here is pure monogamy. The grey tiles are individual chips that have come from Spain, and all the table glasses are from France. And this too is a hand-woven Kashmiri carpet. are some of the perks of traveling in an ultra luxury train. There is 24/7 butler service, fabulous wine and dine, and luxurious accommodation. Now, I can fairly say that the Maharaja Express is catering to the affluent foreign traveler who wants to immerse himself in the richness of India. There are Americans, English, Japanese, Russians, and travelers from across the world who have traveled by the Maharaja Express.
because for them it's mainly shelling a couple of thousand US dollars, which then goes up to 50,000 US dollars, which is approximately 40 lakh Indian rupees for a presidential suite experience. And that is why Maharaja Express is India's youngest, most luxurious and expensive train. Touched down in Jodhpur and all set and ready to explore this beautiful city. Well, one of the perks of staying at the presidential suite and this suite is that you get your own personal car, driver and a guide to take you around in the city, while the other travelers will be escorted in a Volvo bus. Coming down to the main highlight of the train is the amazing itineraries to explore each destination, where the guests get the full essence of the city. Right from exploring the history of the 18th century Mehrangarh Fort, along with the first-class services provided by the train staff, is outstanding. There are lady helpers, train managers and a doctor present at all times on the destination if the guest requires any help. We then headed to capture the hustle and bustle of the old Sardar Bazaar market, and the evening in Jodhpur ended with a wholesome feast at the Khas Bagh, a heritage boutique hotel in Jodhpur, for some drinks and dinner. And our next stop was to chuck down in Bikaner, where we visited the historic Surnagar Fort. All the structures in the Ambar Fort represent opulence and architectural genius. And this is the glorious history of India we truly admire. Now, coming down to my favorite part of the day is the sunset on the sand dunes of Bikaner. The whole vibe and setup is amazing, with the sun setting on the dunes and the guests seated in front of the cultural show organized for us, with singers and dancers showing off their expertise. Apart from the delicious food, the free-flowing bar was just what we needed on a chilly night. Well, back to the train after that wonderful day spent in Bikaner. I must say that the itineraries and excursions that is planned by the Maharaja Express is as good as a first-class experience on board as well. Right from the staycation, the hospitality, the dining, the over-courteous staff that is ready to provide you anything at a beck and call is absolutely mind-blowing, and something that the foreign tourists coming on board find absolutely exquisite. I too had a wonderful time shooting this video only for you guys, and I hope you liked watching it as well. Do let me know your comments in the video. I will be back with many more Lakhs experiences only for you guys. Until then, this is your girl Bianca Saurashtri. I will see you soon. Good night. पहले इनसे पूछ लेते आज। मैं ही पहले मुझसे पूछूं। चलो आप ही बता दो चाचू। यार सच में आंखें खुल गई। हाँ सच में आंखें खुल गई मैंने। आंखें खुल गई, अंदर वाली भी, लेंस वाली फटी तो नहीं? वो क्या बताऊं ऐसी जबरदस्त ट्रेन है। अच्छा, कभी सोचा था आपने कि इतनी महंगा टिकट और इतनी महंगी ट्रेन और ट्रेन के अंदर इतना कुछ कभी तस्वीर किया था? नहीं कभी सोचा भी था? उसकी वजह ये है कि हमने तो यहाँ पे अपना जो देखा है सिस्टम नॉर्मली। वैसे तो ये भी ट्रेन जो है ये टूरिस्ट इस वजह से महंगी है, लेकिन हमारे यहाँ ये ट्रेन है ही नहीं टूरिस्ट। हमारे तो हमारे ट्रेन में भी नहीं है। अच्छा, हमारे ये मैं अक्सर देखता हूँ, मैं जब इनके आइडिया देखता हूँ ना, इनकी बिजनेस देखता हूँ, इनका तरीक़ेकार देखता हूँ ज़िंदगी गुजारने का, अक्सर मैं देखता हूँ कि यही जुमला जो अभी आपने बोला कि हमारे दिमाग में ये चीज़ें क्यों नहीं आ रही। ये बात है, हमारे दिमाग में आइडियाज़ क्यों नहीं आते? हमारे दिमाग में इसलिए नहीं आ रहा। हम लोग मिट्टी खाते हैं। नहीं मैं वो लोग खाना खाते हैं, हम लोग क्या खाते हैं? अरे भाई मेरी तो बात सुनो। यहाँ पे दरअसल गुर्बत ही इतनी वो दिखा के तो लोगों को ख्वाब भी देखने से महरूम कर दिया गवर्नमेंट ने। कर सकते हैं, ये उनका ही काम होता है ना, ये हमारा काम थोड़ी है। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ये किसी प्राइवेट बंदे ने ट्रेन खरीद के भी कुछ किया हो सकता है, जरूरी नहीं गवर्नमेंट करे। ये बड़े बड़े वीआईपी रेस्टोरेंट्स, बड़ी बड़ी होटलें आम बंदों ने बनाई हैं। तो यहाँ पे कौन करता है भाई? यहाँ पे तो उल्टा उसको पकड़ के वो करते हैं, वो उल्टा लटका था। यहाँ तो जो नेक काम कर रहा है उसको भी। अच्छा चलो यार इमरान खान को ही देख लें अभी क्या है, वो इतनी अस्पताल बना के यूनिवर्सिटी बना के बेचारा जेल में बैठा हुआ। चले इस पे आते हैं ट्रेन। नहीं उस पे भी आ जाओ, खैर इंडिया में है कौन सा पाकिस्तान। नहीं मैं ये कह रहा हूँ कि वैसे आप बताएं कि और क्या किस टिकट भी, लेकिन ये कि टिकट ये बहुत महंगा है। किस चीज़ की कमी है? 20 लाख रुपए में मेरे ख्याल में 7 दिन का बताया है, सही है। पहली चीज़ तो ये कि जिनको 20 लाख कुछ भी नहीं लगते,
वो कहते हैं कि देखो वो जिंदगी के हर टेस्ट लेना चाहते हैं, जिंदगी का हर जगह हर तरह का फूड, हर तरह के मजे लेना चाहते हैं। वैसे अगर पाकिस्तान में भी फॉर एग्जांपल ऐसा हो, देखो चंद तो पाकिस्तानी तो कम ही होंगे ना, वो तो जो बिजनेस कम्युनिटी होगी वो होगी। देखिए 20 लाख का मतलब ये बिजनेस लेवल, बिजनेसमैन 8 से 10 लोग होंगे इसमें टोटल, यानी कि चंद डब्बे होंगे, चंद बेडरूम होंगे, तो 8 से 10 लोगों से ज़्यादा इस ट्रेन में होंगे ही नहीं। नहीं ऐसा नहीं मेरे ख्याल में उसकी वजह कि वहाँ टूरिज्म भी ज़्यादा है ना यार, टूरिज्म भी ज़्यादा है बिल्कुल। यहाँ तो नहीं है इतना, वो इंडिया बहुत भी तो बड़ा भी तो मेरे ख्याल अच्छा में 5-7 अच्छा चले आपको एक शख्स 20 लाख रुपए दे रहा है और आपको कह रहा है कि इस ट्रेन में सफ़र करें, तो आप करेंगे? एक सेकेंड 20 लाख भी कोई दे रहा है तो आप करना चाहेंगे? नहीं करूँगी। वजह तो बताएं। उसकी वजह यही है ना, वो एक दिन में सफ़र करूँगी, 20 लाख रुपए चले नहीं 7 दिन का है, जगह 7 दिन का है ना, जगह घूमनी है, फिर वहाँ देखिए ये एक्सपीरियंस हासिल हो जाएगा। हाँ ये तो है। ठीक है तो नहीं, अच्छा अब सुने, अब अगला तो सुने। आपने 20 लाख रुपए वो दे रहा था, आपने सफ़र नहीं किया, वो 20 लाख वापस रख दिया उसने। क्यों? क्योंकि वो तो 20 लाख सफ़र के दे रहा था। नहीं सफ़र के लिए क्या पता, उसने बोला कि ठीक है तुम सफ़र करो, तुम्हारी मर्जी। नहीं मर्जी नहीं, सफ़र के लिए दे रहा था। अब वो सिर्फ सफ़र के लिए दे रहा था तो फिर मैं सफ़र करूँगी। अब लाइन पे आ गई। जाने नहीं दो, ले लो। आप बताएं, आप 20 लाख रुपए लेके सफ़र? मुझे तो कोई 1500 नहीं देगा। जो सच्ची बात। क्यों नहीं देगा यार, क्यों नहीं देगा, वजह बताएं। वो सोचते हैं कि मैं लड़ता हूँ, मैं मुझे तो कौन देगा? दुकान पे समोसे लेने जाऊँ, मुझे कोई चटनी नहीं देता साथ। मुझे 20 लाख कौन देगा? मैं तो नए जूते लूँ, मुझे कोई तस्मे नहीं देता साथ। नहीं की बात है। नए जूते के साथ भी तस्मे नहीं मिलते इसको। नहीं वैसे एक मैं बात तो बताऊं, मिन्नत करूँ कोई माफ़ी नहीं देता। मैं तो सारा दिन मजदूरी करूँ, कोई दिहाड़ी नहीं देता। मुझे क्या कोई 20 लाख? नहीं वैसे एक बात बताओ, समोसे के साथ चटनी तो दे ही देते हैं आप। मुझे नहीं देते ना, मैं गरीब हूँ ना। क्या करें इसका, समोसा देना चाहिए। अच्छा मुझे तो मैं एक जगह काम करता था, मैंने कहा मेरी तनख्वाह बढ़ा दे। उन्होंने तनख्वाह तो बढ़ा के 30,000 से 40,000 कर दी, 7 महीना भी मेरा 40 दिन का कर दिया। 40 दिन का कर दिया, एक महीने बाद बोले हम 40 दिन बाद तनख्वाह मिला करेगी। तो मैंने कहा फ़ायदा क्या होगा? समझ आई सही, कैसे? जबरदस्त। वैसे एक बहरहाल वैसे ये ट्रेन ऐसी है, मेरी बात सुने, जिंदगी में एक मर्तबा करना चाहिए। इन्होंने बेडरूम भी बना दिए हैं, है ना। दरअसल ये 7 दिन का है ना, इसलिए इन्होंने बेडरूम भी बनाया है। दूसरी हाँ, बात ये जाहिर है बिल्कुल बेडरूम हो, बिल्कुल देखिए आपने बेडरूम में खाने पूरा का 5 स्टार होटल। वॉशरूम में, हाँ, होटल टीवी, बना हुआ है हर पूरा चीज़ बना है। 5 पैसे स्टार। किस चीज़ के ले रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है। सही है ना? इसी चीज़ के इसी चीज़ के लिए है ना, ताकि सहूलत लेकिन- एंजॉय करे, सुकून अच्छा से एक और सब बात, कुछ मुझे आए। लग रहा है कि इस लड़की को ज़्यादा प्रोटोकॉल मिला, क्योंकि ये स्पेशल वीडियोस जब बनाने जाते हैं तो उनको भी पता था कि हमारी एक सिस्टम होता है। एक वो जाहिर सी बात है एडवर्टाइजमेंट होगी। लेकिन ये कि वैसे नहीं, भी मुझे देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया और बहुत जबरदस्त है। मैं तो देख के बिल्कुल हैरान हो मेरा तो गई। देख के बड़े दिल खराब हुआ। अच्छा मेरा दिल खराब हो गया। अच्छा आपको लड़की का स्टाइल, कपड़े वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह? आप तो बस लड़की में ही डूबे हुए हैं। आ, लड़कियों पे नजर है, ये चीजें बात है नहीं देख रही, इनको, लड़की पे मैं नजर आपसे है। सवाल कर रहा हूँ कि इस लड़की लड़कियां- की ड्रेसिंग बड़ी पसंद आई, बोल्ड है ना बिल्कुल थोड़ी, ड्रेसिंग पसंद आई है। फिर उस फिजिकली इनको बहुत तो अच्छी दोबारा लगी है। किसी और वीडियो के जो साथ है ना आपसे इनको- मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज।